Ladies and gentlemen, welcome to my YouTube channel Expert in All Domains and welcome to Pakistan Affair सीरीज़। इस सीरीज़ में आज सेपरेट इलेक्ट्रेट एंड मिंटो मॉडल रिफॉर्म से जितने भी से रिलेटेड MCQs हैं वो मैं आज इस वीडियो में कवर करूँगा। अगर आप पाकिस्तान अफेयर सीरीज़ से जितने भी टॉपिक्स हैं इस सीरीज़ में, इस टाइमलाइन में, और उनसे रिलेटेड MCQs अगर आप कवर करना चाहते हैं तो आप मेरी पाकिस्तान अफेयर्स की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहाँ से वीडियोज़ देख सकते हैं और सारे MCQs कवर कर सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। Separate electorate and Minto Morley reforms. Who became the Governor General of British India in 1910? Lord Hardinge। ये जितने भी वाइस रायज और गवर्नर जनरल है ना, इनको आपने याद करना है तो पूरी लिस्ट बना के आपको याद करना पड़ेगा। When the demands of separate electorate by Muslim League was put forward 1909, in which reform the demand of separate electorate was incorporated. Minto Morley reforms. The acceptance of demand for appointment of Muslim League was also incorporated in Minto Morley reforms. The purpose of Hindu Mahasabha was to, क्या पर्पस था? Protect rights and interest of Hindus and Muslims. Introduction of principle of separate electorate was also demanded in central boards and municipal boards. The next MCQ is that there had so far been complete unity in Muslim ranks on question of electorate, but at this stage unfortunate rift was created by somewhat changed attitude adopted by Sayyid Ali Imam. The next MCQ is who opposed the separate electorate, Congress and other Hindu bodies. The next MCQ is which Hindu supported separate electorate, Mr. S.P. Sinha. The next MCQ is which branch of All India Muslim League made earnest efforts to bring home to the British government the necessity of conceding separate electorate. तो इसका आंसर है London branch. The next MCQ is which Hindu organization had merged in the Hindu politics was with a highly prejudicial concept of nationalism. The next इसका आंसर है Hindu Mahasabha. The next MCQ है which organization believed that Muslims should be eliminated from Indian society. तो इसका आंसर है Hindu Mahasabha. When the British government announced that it desired to see democracy flourishing in India, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि जो इंडिया में जो होगी वो डेमोक्रेसी होगी। तो इसका आंसर है 1908. Indian Council Act of 1909 is also known as Minto Morley reforms. Who was Lord Morley, Secretary of State for India? Who was Lord Minto, Viceroy of India? Under which act the Imperial and Provisional Council were enlarged in size? 1909. Which reform conferred on the Muslims the double vote? Minto Morley reforms. The next MCQ, which reform initially created a great deal of awareness among Indian people? तो इसका आंसर भी Minto Morley reforms. The deputation met Lord Minto in 1909 for separate electorate for Muslims headed by Sayyid Amin Ali. The next MCQ is the acceptance of separate electorate for the Muslim enhanced their political importance. The next MCQ is the acceptance of separate electorate gave strength to which theory, which became the basis of Muslim freedom struggle? Two-nation theory. How many people were killed in Kanpur incident in 1913? 133. Which government demolished the mosque in 1913? British government. What stand was taken by British government to justify its act of demolishing the mosque place where ablution was performed? तो washing place is not scared part of mosque, इसका ये आंसर. Which lord in order to pacify the Muslim feelings visited Kanpur? तो इसका आंसर Lord Hardinge. Which Lord Hardinge in order to pacify the Muslim feelings visited Kanpur? 14 October 1913. तो ये इसका लास्ट MCQs था सेपरेट इलेक्टरेट एंड मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स। ये कब हुए थे? 1909 में। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड MCQs जितने भी हैं वो काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुके हैं PPSC में, CSS में, PMS में, FPSC में। तो आज की वीडियो में यही MCQs मैंने कवर किए हैं। आइंदा आने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि इसी तरह आपको वीडियोज़ मिलते रहें और आप MCQs की प्रिपरेशन करते रहें। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।